of my relatives do. They have. I don't really need that. I don't watch much on Amazon. There are many other ways you can watch things. Okay. What kind of Hollywood films do you like? Action comedy. My main purpose of watching Hollywood films is to understand their culture a little bit. And action films don't help you understand the culture so much. So I like watching family drama where there isn't much of action. There is a story, conversation. Uh, because Fast and Furious, for example, it's a very, very famous, franchisee, and I'm not into those things anymore. Maybe when I was young, I liked them a little bit, but I have always enjoyed films where there are more conversations, meaningful conversations. There was a movie called Raincoat in Hindi, and two people are in a room and they have lots of conversation. And I enjoyed that movie. Other people found it boring. So I like slow films, art films. Yeah, a lot of people find them boring. And I say, nah, it's not boring. There is something here that I really like. When I was young, I liked movie like Kabhi Khushi Kabhi Gum. But, you like those films only when you are young, honestly. Today, I get really bored watching that stuff, that kind of movie. I like watching something meaningful, something that makes me think. Entertainment, I don't need entertainment anymore, I feel. I need, I just want to understand the world better. So I want realistic stuff which have something to do with reality. My daughter often watches films with paranormal activities, horror movies, and stuff like those. Okay, and and I don't really enjoy them much. I mean, I like horror films too sometimes. My favorite way of watching horror films is with my wife. I love it when I'm with my wife. We just hold hands together, whether we are in bed or we are at the cinema. You know, it's fun way to spend some time. But mostly I watch TV alone. So I like watching stuff, documentaries more. I like watching documentaries more than movies now. I think people get boring a little bit when they cross 40. They're not fun. When I was not 40, I like watching movies. And now I think I like watching documentaries more. Yeah. It's 7:10 now, and a lot of people are still not here. Okay. I think I need to be a little strict about the time. I have already said that the students be here by 7:05 maximum. Yes, you are allowed to come in. But look at the time. You should be here at 7 o'clock. What is the time? And you left home maybe 6:55. You left home at. So do you think you are a flying queen? You will run and get here in 5 minutes? Then why don't you leave home at 6:45? Because it normally takes you 15 minutes to come here. So leave home at 6:45 next day, not at 6:55. You left home at 6:50. Today you left home at 6:55. You got here at 7:10. So it took you 15 minutes. So if you want to be here on time, then you need to leave home 15 minutes before your class time.
Class time is 7 o'clock. So if you do the mathematics, you should leave home at 6:45. You will easily get here by 7 o'clock or 7:1, 7:2, isn't it? You won't be late. Why don't you leave home early? Because you get up late? Some days I can understand, but you are coming late almost every day. Change it. On Monday, you'll be here at 7, 7:2. All right. Now, what next? What are we studying here? Yes, yesterday we talked about numbers. All right. Let me open the book. Guys, exercise 3, page number 37. How do we say these numbers in English? Exercise 3, page number 37 in the main book. How do we say these numbers in English? No, no, exercise 3, you're looking at the wrong exercise. Exercise 3. Okay. I'm sending it in the group. Give me a second. How do we say these numbers in English? Go ahead, tell me. 1.5. How do you say it? 1.5. In Hindi, we say ded. In Hindi, we say ded. But in English, 1.5. Next, Peter. Next. Because next. After that, the second number. Where is 1? 2.25. 2.25. 2.25. 1.5. 2.25. In Hindi, savado. In Hindi, savado. Right? In English, 2.25. Okay? 2.25. Next, Peter. 6.8. Next, 17.5. Very good. Next, remember, when you look at a number written this way, you see there are some group, numbers which are written kind of together. They're closer. For example, O to O, and then take a pause when you're reading to suggest that gap. To suggest, indicate that gap, you take pause when you speak. You say O to O or 0 to 0, whatever, doesn't matter. But after the second 0, you take a little bit of a pause. Why? To suggest that there is a gap. So O to O, 7481, 6490. Did you notice how I put those letters, numbers together because they were written together? In my speaking, I said them together and then took a pause. So can you read that again for me? O to O, 7481, 6490. Okay. Now 0 and O, that's not a big deal. In British English, they say O. In American English, they say 0. Not a big deal. Okay. As an Indian, you can say anything you want. You can say 0, you can say, oh, nobody is gonna put a gun to your head. Oh, why did you do that? Nobody's gonna punish you, okay? So feel free. But the point is, when you say these numbers, look, there are clusters, groups, right? Three groups. Do you see three groups?
So when you have set the numbers in a group, after that, take a little bit of a pause so that people can feel that, okay, they need to put a gap there. 020 7481 6490. No problem. Next, can you do the next? 07861 56678. No problem. Okay. So we learned how to read some numbers in English, right? Uh, Listen and check and practice the number. 4.14. I am playing the number. Yes, down 4.14. Tape script 4.14. 1.5. 2 1/4. 6.8. 17.5. 020 7481 6490. 07861 56678. Did you notice that pause? Did you notice that pause? Okay, that's important. Practice the numbers. Say them one more time, guys. Yes. Very good. Very well done. Good. Very good. Well done. Okay. Now, are you ready for some practice? Exercise 4. Write the numbers you hear. You are going to write the numbers you hear. हिंदी में बोलना तो write the numbers you hear. जो नंबर सुनिएगा उसको लिखिए. लिख लीजिए जो सुनाई पड़े. Write the numbers you hear. Write the numbers you hear. Ganpat, I hear you were sick. What was wrong with you? Sit down first. It's not a stomach. It is stomach. 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 And it's not a stomach pain. Normally it's a stomach ache. So why did you have a stomach ache? Did you go to the doctor? What did he say? It was just gas. A young person like you had gas problem, and because of which you had to go to the doctor. I don't remember ever going to the doctor because of gas problem till date, and I'm 44, guys. Okay. That's unbelievable. Young people normally don't have gas issues. Okay, that's bad. You know that. Because in English we said you could not digest anything you ate. क्या बोलेंगे? I could not digest anything I ate. कुछ भी खा रहे थे, बच नहीं रहा था. I threw it up. I was vomiting. Okay. All right. Food poisoning. Food poisoning. It was not a gas problem. So, are you feeling any better now? Take care of your health. Don't eat outside food. He eats every day. What does he eat? What does he eat, Ravi? Momos. And if you eat momos, remember, do not eat that red chutney a lot. That red chutney is very dangerous. Okay, it is red chili. And you know, red chili, he's not telling the truth. You don't eat momos every day. Okay. But if you do, momos are not bad. Okay, because they're steamed food. If they're properly cooked. If they're properly cooked.
then you're fine. Don't worry. But I would suggest you move back a little bit. Yes. All of you move a little bit back, please. A little bit. Okay. Yes. A little bit. Yeah. Yeah, you're fine now. You're fine now. Do you think it will reach there now? Now do this? Yeah, no, it won't get there. Unless you want to intentionally. And I know you don't want to do it intentionally. Okay. Um, street food in Bihar. I will take a new bat from you. Okay. You will have to bring, if it broke, you would have to bring a new bat. Okay, guys. Street food in Bihar shape is not that bad. Because they're all hot. Chaat. Golgappa can be dangerous. Avoid Golgappa. Nowadays, they are not using imli to make Golgappa. Golgappa water earlier was prepared with tamarind. Okay. But nowadays, they use a chemical which is white in color and it looks like salt. It looks like, they call it nimbu sat. I think they call it nimbu sat in the local language. In English, there is a name for it. Uh, it's cheap. You use 2-3 spoonfuls of it, 50 grams, and you can prepare 30 liters of water. For 30 liters of water, you will need 1 or 2 kilos of tamarind otherwise. And 1 or 2 kilos tamarind cost you more than 100, 200 rupees. Okay, and they don't want to spend that much. So they buy this chemical, which is worth 5, 10 rupees. So don't eat Golgappas now. Golgappa wala, only eat Golgappas if you have seen them making that water with tamarind. Tamarind is not that harmful. It is harmful, but not that harmful. But this chemical they're using to make the water is really bad. And I know the change difference in taste as well. There is one Golgappa wala, his Golgappas are totally safe to eat. Just up outside the post office, the old Golgappa wala, Padani, okay? Their Golgappa is, they prepare it traditional way. Now that I'm talking about Golgappa, my mouth is watering. Hansar has explained very well why your mouth waters when you mention anything acidic like Golgappa or achar. When you mention these things, your mouth waters. There is a very good science behind it. Okay. Um, Coming back to what we were doing. Write the numbers you hear. वो numbers लिखिए जो आप सुन रहे हैं. Okay. So write the numbers you hear. Okay. Are you ready to write the numbers you hear? But remember, we are not going to give you just numbers. We are going to give you sentences. We will play sentences. You have to catch the numbers from there. Ready? You don't need to write the whole sentence. Just write down the numbers. Let me play. 4.15. Tape script 4.15. 1, There are 30 students in my class. Get ready. Come on. What are you 17 doing? boys and 13 girls. 2, Okay. Ishtika, where is your pencil? Then where is your pencil? Are you guys planning on studying a lot of things in the future as well? Maybe get married to the same girl? You guys, wow, I love his confidence. Just broke the pencil into two. Yuvraj, don't worry, your future is bright. Whether you learn English or not, you're gonna be fine, okay? I love his confidence. Next moment, he just does problem solved. Good boy. Well done. I like that. Okay, but Vikas, be a little more sincere. Okay, you're here without a pencil. Can you believe it? I mean, think about it. Every day, sometimes I'm feeling like, are you guys having regrets for agreeing to be in the AC? Because at this time we don't even have electricity and it is awful. So
solar panels are working, but the hybrid inverter is not working. It is the online inverter and on-grid inverter, sorry. Means when light goes out, we don't have, we can't really produce electricity. We only produce electricity when the light is present because that thing, that inverter, we just got to know. I would like to show you guys our plant actually. Okay. We got, we got a, that is what we were told. The shopkeeper told us that he was sending us a um, hybrid inverter. A hybrid inverter, makes electricity, produces electricity, whether light is present or not present. It doesn't matter. But he actually sent us an offline, off-grid inverter. We cannot use an off-grid inverter because we have an on-grid power plant. We produce electricity and send it to the government. Every day, we are producing around 20 units of electricity. 600 units of electricity a month we are producing. Huh? Well, basically, we are not thinking of earning money. We're thinking that the the electricity we consume, at least we will have some compensated for because this is cheaper. You know, you spend around 3 lakh rupees and you can produce 20 units of electricity every day, which is worth 20 units means nearly, I think, 150 rupees. Yeah, 7 rupees per unit, 150 rupees. So per month, 4,500 rupees, which is 1.5% of the investment, right? And you don't need to make that much investment actually. If you get the government scheme, then you'll get it for 2 lakh rupees. So invest 2 lakh rupees and earn 4,500 rupees per month, which is more than 2% of your investment on a monthly basis, which is a great idea, I think. So I recommend this to everybody. The problem is they in on hybrid inverter they promised to send us. We have received a new inverter. It is upstairs, but it is gonna be useless for us because it is an off-grid inverter. And he says, the shopkeeper, that he misunderstood what we said. And the thing that we want is worth 1,30,000. 1 lakh? So I said, no, no, that's too much of investment for 1 hour, 2 hours. Just give me a second. Hello? हेलो हाँ हाँ जी बोलिए मॉर्निंग बोलिए कल आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हाँ आ रही है बोलिए मैं बोल रहा हूँ महिला कॉलेज के पीछे आप कहाँ से बात कर रहे हैं कहाँ से रहुई से तो आप अभी बिहारशरीफ में नहीं है जो आप बिहारशरीफ में आएंगे तो आप महिला कॉलेज पोस्ट ऑफिस के पास आइएगा मेन मेन पोस्ट ऑफिस बिहारशरीफ ठीक है वहां आने के बाद मुझे कॉल फिर से पूछिए 5,000 for the physical class. Physical class की fee 5,000. Online class 7,000. I will give you more details when I get free. मैं आपको और details देता हूँ अभी मैं क्लास में हूँ ठीक है Okay. Okay. Hmm. Yeah, 1,30,000 rupees for the inverter. And why do we need that inverter? Because when light goes out, like right now, light has gone out, we are not producing electricity because our inverter is on grid. If we had a hybrid inverter, we would be making electricity right now as well, and we could use it. Okay. But only for an hour or so, 1,30,000 rupees investment on the top of the solar plant, that doesn't sound like a convincing idea.
What we have was 55,000. Okay. The second inverter that we have ordered, we have already got it. The second inverter has come. But unfortunately, they have sent us an off-grid inverter. An off-grid inverter will not send electricity to the grid. It will produce electricity and we can only use it. That's all. We don't want that. We want an on-grid inverter and or a hybrid inverter. But we definitely need an on-grid thing because we have to send electricity to the government because we use it at night as well. If we produce 20 units of electricity in one day, we do not use all those 20 units in the daytime. We only consume 10, 12, 15, and the rest of those, we consume them at night. So if it is not on grid, then what are we going to do with the electricity that we produce? It will go waste. Okay. Hmm. Again, suggestion to you, even if you guys have just a domestic consumption, 1,500, 1,000 rupees per month, see, no, but no worries. Okay. What we are going to do from Monday is we will conduct our class downstairs in the AC room. As long as the light is present, the room is cool. When light goes out for 10, 15 minutes, it's not a big deal because light doesn't go out for longer than 10 minutes. Right now, we had this power cut for 5 minutes only. So not a big deal. As long as the room is cold with the AC or cool with AC, we will not feel this power cut. So from Monday, we will run our class downstairs. Okay. All right. In the AC room. All right, guys. There was a little bit communication gap with the shopkeeper. He sent us an inverter and we were okay, ready to pay 55,000 rupees. This is worth 55,000. But now he tells us that what we want is more expensive, 1,30,000. I don't want to spend that much extra. We were somehow okay with this. Chalo bhai laga do 55,000 is okay. But now 80,000 more? No, no, no. Too much. Yeah. It's for those places where you get only 4 or 5 hours of electricity. Then fine. Produce electricity when the light is not present with the hybrid inverter. But here we have only power cut for 10 minutes, 15 minutes, or days, 1 or 2 hours. But on a regular basis, we don't get 2 hours of power failure, power cut. So you are listening to the audio file, 4.50. And listen and write the numbers, okay? Let me play. I live at number 15. 1, There are 30 students in my class, 17 boys and 13 girls. 2, I live at number 62 Station Road. My mobile number is 07629 34480. 3, My father works in a big hotel. There are 460 rooms on 16 floors. 4, The population of my town is 280,000. Actually, you have I can see most of you have brought your earphones. Yeah. So go ahead, listen to the audio that I have shared and do this exercise. Write the numbers, play the audio on your own. Okay. Yes. Asim, Sahil, you have to arrange earphones. You have to bring your earphones. Ravi, you have brought yours? Why not? What kind of stupidity this is? I mean, you know that you need this here, the earphones. No, no, don't play that way. And you, Ganpat, I'm sorry, but you're giving a very bad impression on me. I feel like you guys are stupid or what? You know you need them. Why won't you bring them?
Hey, what's the problem? If you don't have much money, you can buy one pair of earphones for 60 rupees, for God's sake. So please don't tell me it is a money problem for anybody here. My students are not that poor. They can't afford to buy a pair of earphones. It's sheer carelessness. Yuvraj, what's wrong? Why haven't you got your, oh, you brought, good. This is only one piece, single piece. Oh, very selfish. Okay, and then it's okay. Good, good, good. Sahil, what's your problem? Why don't you have your earphones with you? दूसरा ले ले भाई. Ravi, what's going on? भूलना क्या होता भाई? You need earphones here. Yesterday we had this conversation. Yesterday you were present here, and you forgot to bring your earphones again. Don't do this, please. It annoys me. Ganpat, don't tell me this next time, okay? Just like you bring a pen, notebook, book, bring your earphone every day. Guys, we have no other ways. I have to play this audio here. Listen again. Tape script 4.15. 1. There are 30 students in my class, 17 boys and 13 girls. 2. I live at number 62 Station Road. My mobile number is 07629 34480. 3. My father works in a big hotel. There are 460 rooms on 16 floors. 4. The population of my town is 280,000. Aditya, value my instructions, beta. I said, don't write the whole thing, write the number. Do you remember me saying that? You have to catch the numbers only, okay? Now, do I play one more time? Tape script 4.15. 1. There are 30 students in my class, 17 boys and 13 girls. 2. I live at number 62 Station Road. My mobile number is 07629 34480. 3. My father works in a big hotel. There are 460 rooms on 16 floors. 4. The population of my town is 280,000. Tape script 4.15. 1. There are 30 students in my You're not supposed class, to pause. 17 You're supposed to play boys and and 13 always. girls. अच्छा दोस्तों, मैंने ये बात आपको कही है कि ऑडियो रोकना नहीं है, काम से ऑडियो का काम करते समय ये बात कही है. Very cheeky. I've said it very many times that when I play the audio or you are playing the audio, you are not allowed to pause. You're supposed to catch the information while you are listening. You can't pause. Pausing suddenly changes the difficulty level. It becomes very easy when you can pause. आप किसी बात करते हैं उसको pause भी कर सकते हो क्या? तो फिर वो practice क्यों करना जो चीज possible नहीं? If somebody is talking to you in an interview or in a classroom, if you have this freedom, pause. No, you can't. So why practice that? Always practice what you are going to encounter in your real life. In your real life, you're going to listen to people non-stop. So practice the same. Okay, number 1, what do you remember? What are the numbers? 30, 17, 13. Now, do you remember what the person said? What is, there are 30 students in my class, 17 boys and 13 girls. Number 2. Yeah, do you remember the sentence?
I live at number 62 Station Road. Okay, my mobile number is. Did you put those numbers in two groups as she said in the audio? Did you take care of that pause? Good. Number 3. Okay, now what was the sentence? My father works in a big hotel. There are 460 rooms on 16 floors. Last one, beta. The population of my town is 280,000. Okay, let's listen. 2, I live at number 62. 1, There are 30 students in my class. There are 30 students in my class. Ganpat studied together with the class, with the rest of the class. There are 30 students in my class. 17 boys and 13 girls. 17 boys and 13 girls. 2, I live at number 62. I live at number 62. I live at number 62. There is a lesson here. What is 62? What is number 62? I live at number 62. What does it mean? It is house number or flat number. Well done. Yes, it is. And now the person says, I live at number 62. But remember, when you talk about your address, then you use the word at. But when you talk about town or city or village, then you use in. This is a typical thing that Biharis here say, I live at Bihar Trip, I live at Bihar Trip. That doesn't make any sense. There is no reason why you should say, I live at Bihar Trip. You simply say, I live in Bihar Trip. Bihar Trip is a town. And before towns, we use in, we don't use at. We say, I live in and the name of the town. I live in and the name of the village. Some teachers will tell you, oh, it is a small town, so we use at. When it is a big city, then we use in. They do not know what they are talking about. उनको पता ही नहीं वो क्या बोल रहे, बस बोल रहे हैं. Those people who make this kind of explanation they give, at is used before small towns, in is used before big cities. They have no idea what they're talking about. Nonsense. It is utter nonsense. Okay? So please avoid saying, I live at Bihar. And get more used to, I live in Bihar. Because Bihar is a town. Now suppose you live in a village called Bhagwandas, Bhagwanpur. That's a name of village. क्या बोलेंगे? I live in Bhagwanpur. Simple. Any problem? So use the preposition in before cities, villages, towns. All right? But if you want to use, if you want to mention your address, use at. Okay, I live at number 52. So when you are mentioning your address, then you use at. And when you mention the name of the village, the name of the city, the name of the town where you live, then you use in. To live in a village. I want to live in name any village. But size doesn't matter. The size is irrelevant here. All those people who tell you small town at big city in, they are simply ignorant in English. Nothing more, nothing less. They're ignorant. They read some stupid grammar books, cheap books available in the shop. Those books are written to earn some money. Even the writers don't have any credibility there. And they say, "Kitab mein likha hai." Everything written in the book is not right.
Whether the source is authentic, that is what we need to check. There are lots of cheap books available in the shop for English, English grammar, English translation. They are not authentic books. Everything written in those books is not correct. But they are selling because in places like Bihar and Jharkhand and UP, there are millions of learners of English who have very poor English knowledge and they need this Hindi, English, Hindi, English. So these bilingual books are available to earn some money. For example, Oxford translation, my foot. Oxford word डाल देने से वो अच्छा किताब हो जाएगा. It's one of the most useless things students have. लेकिन स्कूल को करना पड़ता है प्रेशर में, कुछ स्कूल करते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं. But I do not recommend that. It's a total waste of energy. If you really want to learn what's written in the Oxford translation book, okay, then the teacher, if the teacher is a little, I will say, innovative, okay, he or she can handle those things like all those sentences. I'm teaching my young kids past tense. I'm not asking them to look at any books. I'm asking them to form their own sentence. कल क्लास में हो गया past tense. कल 5 बजे उठे, तुम बोलोगे हिंदी भी, तुम बोलोगे इंग्लिश भी. कल चिकन खाए, तुम हिंदी में बोलोगे, तुम इंग्लिश में बोलोगे, तुम्हारी हिंदी, तुम्हारी इंग्लिश, अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. तो हर एक चीज की प्रैक्टिस, ओके, यू हैव टू फॉर्म योर ओन हिंदी सेंटेंस. And this is what I suggest as a teacher to other teachers. Do not ask them to look at somebody else's Hindi. Hindi should be yours. And then English should be yours too. Then you will have more improvement. Because you know what you're saying. ऐसे दूसरे की हिंदी को इंग्लिश करने में ना आप दिमाग कम लगाते हैं. आप महसूस ज्यादा करते हो अपनी हिंदी को इंग्लिश करना. Anyway, I live at number 62. 62 is the house number or flat number. Okay. Okay. But when it comes to street name, you can go with the inn. I live in High Street. Okay. I live in Hill Street. All right. I live in Traven Road. I live in Traven Road. Okay. I live in Alamganj. I live in Kulpur. Okay. No problem. हालांकि ये इस तरह के जो हिंदी वाले हैं ना थोड़े से अलग हो जाते हैं, तो इनमें एट और इनका कोई मामला नहीं रह जाएगा. ओके. But normally when you have the word street or road attached to something, और एक नाम जैसे मैं बोलूंगा I live in Bhansasur, कोई दिक्कत नहीं. I live in a part of Bihar state called, देखो, it means I live in Bhansasur. तुमने ये लाइन सुना था 2 दिन पहले ना? Some days ago you heard a sentence, I live in a part of Perth called Greenwood. Greenwood is a part of a city. Bhansasur is a part of Bihar Sharif. So I live in a part of Bihar Sharif called Bhansasur. It means I live in Bhansasur. No confusion. तो खाली प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ नाम ऐसे इनके साथ इन बोलने में अजीब लगता है लेकिन बोल दीजिए. जैसे पुल पर ये अपने आप में ही ये कोई समझो वहां पुल होगा कभी पास में, इसलिए लोग कहते होंगे पुल पे जा रहे हैं. आज पुल नहीं है लेकिन उस एरिया को क्या कहते हैं, पुल पर. हाँ, भैंसा तो मुझे नहीं पता उसकी हिस्ट्री, बट आई नो हिस्ट्री ऑफ पुल पर. देयर वाज अ ब्रिज हियर. एक पुल था, एक नदी थी बीच में, यू नो दिस पंचाने नदी. So actually it was pretty long. It used to cross Bihar Street. People slowly and slowly filled the river and now you see the river is gone from Bihar Street. You only have the river there, a small pond type river. Okay, not very big anymore. But in the past there was a big river which flew through this town. Okay, through this town. होते हुए यहाँ से जाते थे. And that's why this area was called Garhpur. Because that's where all the kings and the aristocrats lived. Garh. All the tall buildings, high buildings were there. Garhpe, the oldest part of Bihar State, Garhpe. भराव मेरे ख्याल से उसमें भरा गया होगा. ठीक है, जो नदी आती होगी ना उधर से होते हुए, उसको भरा कुछ वहां पर इसी वजह से भरा होते. But again, you won't know unless you talk to your grandfather. And if your grandfather, when he was a child and he talked to his grandfather, then maybe he can pass on that information to you. So if you have your Dadaji alive, उनसे पूछो ये सब.
क्या उनको पता है? ओके, अगर उनको बचपन में उनके दादाजी ने बताया होगा, then of course he would tell you. And if he didn't have this conversation with his dadaji, even your dadaji will not be able to help you guys. I wish I could go back in time and talk to my dadaji about that. But आप कहोगे sir, if you could go back in time, why wouldn't you go back in time yourself rather than asking your dadaji? Okay. Um, the girl who's speaking, she lives at number 62, Station Road. Station Road. My mobile number is उसने कहा I live at number 62 Station Road. दोनों से क्या पता चला? इससे क्या पता चला? एड्रेस। आप उसके घर पहुंच सकते हैं। पहले जाएंगे कहाँ? स्टेशन रोड। फिर वहां क्या ढूंढेंगे? हाउस नंबर 62, फ्लैट नंबर 62. I live at number 62 Station Road. Any problem? I say I live at house number 441, ward number 36. मेरे घर आ सकते हैं, right? Address. This is the address. One part is missing, city. But if you are sharing with somebody in that city, you don't need to mention the city. Suppose I'm talking to someone in Bihar, and I want to tell him or her my address. Then I'll say I live at house number 441, ward number 36. The person will ask where ward number 36 is. They'll get here, and then we'll look for 441. They'll come to my house. So she mentioned her address, and that's why she used the word at. तो बच्चों, at कब लगाना है हमें? Address बताना, address बताना है दोस्तों. When we mention address, then we use at. Address बिना house number, flat number, house name के नहीं हो सकेगा. मान लो आपके बिल्डिंग का नाम है गीता भवन, क्या बोलोगे? I live at गीता भवन. वहां आप नाम नंबर नहीं देके नाम दे रहे हो. I live at गीता भवन, भराव पर. ठीक है? I live at गीता भवन, रामचंद्रपुर. Any problem? Easy. और ये सबसे क्रेजी थिंग है, ये सब चीजें देखो, मैं जितनी चीजें बचपन में सीखा ना, मैं गलत जान. मैं अभी एक और वर्ड एक्सेप्ट करना चाहता हूँ गलत, जो मैंने कुछ दिन पहले तक गलत बोला है. लैडल, LADLE, कल्चरल. बचपन से मेरे कान में क्या गया? लैडल. मैंने कभी चेक नहीं किया. तो लेडल पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? लेडल पढ़ते हैं, लैडल नहीं पढ़ते. लेडल. और मैंने आज कुछ समय पहले तक बोला है लैडल. तो ये बचपन में मुझे बताया था कि छोटे जगह के पहले एट लगाना और बड़े जगह के पहले इन लगाना. ये रूल कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना आसान है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन वो गलत थे जिन्होंने ये लाइन कही. एज अ चाइल्ड आई एक्सेप्टेड इट, बट आई लर्नड इट लेटर दैट नाउ दिस नॉट राइट. तो छोटा एकदम 10 लोगों का गांव है, लेकिन गांव का नाम रख लो रमजानपुर. ठीक है? क्या बोलोगे? आई लिव इन रमजानपुर. 10 लोगों का गांव है, 10 घर है, मात्र 50 लोग, नो प्रॉब्लम. आई लिव इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड रमजानपुर. बात खत्म. It doesn't matter. You have to say in before names of villages and names of towns and cities. Size is irrelevant. फर्क ही नहीं पड़ता उसका. Can we continue? 07629 34480. 34480, one group. 34480, one group. And the rest of the digits, another group. Okay. 3. My father works in a big hotel. There are 460 rooms on 16 floors. My father works in a big hotel. There are 460 rooms on 16 floors. 4. The population of my town is 280,000. The population of my town is 280,000. The population of my town. The population of Bihar Sharif is 350,000, I think, or maybe 4 lakh now. Okay, done? I think from yesterday, there was an exercise on the previous page. 4.12, right, guys? Let's listen and check the audio script that you have written. 4.12. Tape script 4.12. 1. Look at Angela's car. Look at Angela's car. बेटा आपने क्या सुना, सुहानी?
नहीं बेटा, उसने कहा लुक एट एंजेला's car. अच्छा, लगता है मुझे आप लोगों के साथ थोड़ा ज्यादा ये स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, नहीं? ऐसे नहीं काम होगा, आप लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाए। आपको इंग्लिश सीखना है, यस नो? देन यू गाइस नीड टू डू समथिंग फॉर दैट लर्निंग, और अपने आप हो जाएगा, ऐसे ही है, बस ऐसे ही है। आई वांट टू सी योर ऑडियो स्क्रिप्ट। Everybody actually, missed that app. Okay, I've seen be regular as well. साहिल, ऑडियो मोबाइल है, ईयरफोन खरीदो और काम करना शुरू करो बच्चे। मैंने काफी समय दिया तुम्हें कंफर्टेबल होने के लिए। अब तुम गलतियां करोगे, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, बट आई डोंट वांट यू टू जस्ट चिल एंड रिलैक्स, ओवर रिलैक्स। आप लोग गौर करें तो मैंने साहिल को कभी डांटा नहीं है पिछले कुछ दिनों से जब से आए हैं, क्योंकि मुझे पता था इंग्लिश थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन अभी आप कंफर्टेबल हो गए हो, आप काम कर सकते हो थोड़ा बहुत। कोशिश करना बच्चे, जितनी गलतियां होंगी आई विल हेल्प यू, बट यू हैव टू डू योर वर्क। जैसे कल कहा था सुन के लिखना, तो सुन के गलत ही लिखते, 15 20 50 गलतियां हो जाती, लेकिन लिखना तो सही था ना मेरे भाई। अब तू बताओ कि अगली बार मैं तुमसे ऐसे बात कर पाऊंगा जैसा तभी किया है, एक ही गलती के लिए? साहिलवा, ऐसे निकलेगा मेरे मुंह से, याद रखना, ओके? You wrote it. This is your handwriting. Are you sure? Nice. It's very girly handwriting. Just kidding. Okay. रवि, ये लड़का, देखो देखो बच्चा वाला दर्द कर रहा है, दबा दें तो काम नहीं करोगे अपना। कल ही कहा था ना, ना होमवर्क करके आए, ना ईयरफोन्स लेके आए, तो तुम यहाँ लेने क्या आए हो भाई? रवि, क्या बच रहा है यहाँ? होमवर्क कर रहे ही नहीं, आ गए, ईयरफोन्स नहीं लाए, ऑडियो फाइल सुनना है यहाँ, तो लेने क्या आए हो? कैसे चलेगा? डू यू थिंक कि ये तुम्हारे इंग्लिश सीखने के लिए सही रास्ता है, जो जो रास्ता ले रहे हो? तुम साइड वाला रास्ता ले रहे हो, जिससे इंग्लिश नहीं सीखना होगा। मेन रोड क्या होता है? प्रैक्टिस करो। आप अपना होमवर्क अगली बार, अभी कितनी बार आपको फाइन कर चुके हैं हम अब तक? 2 बार आपको फाइन कर चुके हैं ना? आज तीसरी बार होगा ना? आपको बुरा नहीं लग रहा है कि आप पैसे यूज कर रहे हो और आपको अपनी इमेज की भी परवाह नहीं, और सबसे बड़ी बात, आपको इस बात की फिक्र नहीं कि आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे ये गलतियां कर करके? अपने काम को मुश्किल करते जा रहे हो आप। By the way, this is crazy. Look at Angela's car. Look Angela's car. No, look at Angela's car. अरे एंजेला के कार को देखो ना. Look at somebody. Suppose suppose we go to the college together. Okay, and there in the pool I am dancing. Okay, and अचानक से आपकी नजर पड़ी, ठीक है, तो आपने कहा, अरे देखना देखना विनय सर को देखना. What will you say in English? Look at Vinay sir. Okay, he's dancing. Okay, यही बोलेंगे ना आप. तो yeah, make a video. Let's make a video, guys. Okay, I know. My main point was वो ऐड क्यों छूटा? तुम जानते हो कि ऐड बोलना था, फिर भी नहीं लिखा कैसे? दो चीजें बेटा, while listening to the audio file,
two things need to work together, your ears and your mind. You can't totally depend on your ears because sometimes what happens in English, the words are not pronounced the way you expect them. But you should be able to guess कि होना क्या चाहिए, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने अभी कहा, अगर आप मुझे स्कूल में डांस करते देखोगे तो आप अपने दोस्त को कैसे ये बात करोगे, अरे अरे देखना विनय सर को देखना डांस कर रहे हैं, यही जाएगा ना मुंह से निकलेगा। इंग्लिश में कैसे जाएगा? लुक एट विनय सर, ही इज dancing. Okay, similarly here. It's a Mercedes. 1, Look at Angela's car. It's a Mercedes. Look at Angela's car. Look at Angela's car. It's a Mercedes. It's a Mercedes. उसने जिस तरह से बोला Mercedes बोला, हम लोग Mercedes बोलते हैं, कोई बात नहीं। wow. Tape script 4.12. 1, Look at Angela's car. Sahil, you guys don't have any audio script here? You too? Looking at the audio script in the group? Okay. Look at Angela's car. It's a Mercedes. It's a Mercedes. wow. अरे देखना उधर करवा, Mercedes है यार, Mercedes है, ऐसे ही बोलते हैं लोग। It's a Mercedes. The car is a Mercedes car. It's a Mercedes. They're really expensive. They are really expensive. Is it fast? Is it fast? कौन कौन बोल रहा है, आपको एहसास करना होगा, ठीक है, आवाज से। Okay, there are two guys talking. Very fast. Very fast. 2, Does Tom have a lot of money? Now, conversation number two. Does Tom have a lot of money? Does Tom have a lot of money? Keep it up. कौन जवाब देगा? सामने को टर्म के साथ हैव का यूज होता है, हैव को एक्टिव लगा है। Does Tom have a lot of money? कोई जवाब दे दो प्लीज सामने को। टॉम के साथ तो हैव लगना चाहिए था, बचपन से पढ़े हो ना, तो हैव क्यों लिखा है? Does Tom have a lot of money? उसने हैव क्यों बोला, बता दो उनको। हाँ, तो तुम क्या बोलोगे, टॉम हैज अ लॉट ऑफ मनी कि टॉम हैव अ लॉट ऑफ मनी? क्या बोलेंगे? टॉम हैज अ लॉट ऑफ मनी, वहां हैव क्यों लिखा है? तुम दो दो चीज बोल रहे हो एक साथ। एक बोल रहे डज होगा पहले लगा, फिर एक बोल रहे फ्रेज होगा। फ्रेज क्या होता है? इस तरह से अपने आप को कभी बेवकूफ ना बनाना कि फ्रेज होगा। व्हाट डू यू मीन फ्रेज होगा? ए लॉट का अपना मीनिंग होता है, ए लॉट ऑफ मिल्क, ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कैसे बोलूंगा? तो इसमें फ्रेज क्या है भाई? तुम्हें जो तुम जिस तरह से फ्रेज सोचते हो वो ऐसा कुछ चीज नहीं होता। पहले दिमाग से बताओ, कोई फ्रेज जो चीज होती है वो तुम्हें नहीं पता, और जो तुम जिसको फ्रेज समझते हो वो फ्रेज नहीं होता। तुम समझते हो इसका फिक्स्ड रहे हर समय साथ आने के लिए, राइट? उसी को ना फ्रेज कह रहे हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। कोई भी दो वर्ड जो एक साथ आते हैं और मीनिंग देते हैं वो फ्रेज है। जैसे ए बॉय इज अ फ्रेज। क्या बोला मैंने? अ बॉय। लेकिन क्यों फ्रेज है? दो वर्ड हैं और दोनों का मीनिंग साथ में बनता है। ए बॉय, मैं कहूँ ऑन द रूफ, ओके, एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, ए गुड स्टूडेंट, ये भी एक फ्रेज है। इसका मतलब हुआ एक अच्छा स्टूडेंट, एक गुड स्टूडेंट। कितने वर्ड्स हैं? तीन। तो एक से जैसे ज्यादा वर्ड्स हो गए और उसका अपना में मीनिंग बनता है, वो क्या कहते हैं? फ्रेज है। अब मैं कहूँ रूफ ऑन, तो इसका कोई मतलब नहीं निकला, इसलिए ये कोई फ्रेज नहीं है। दो वर्ड्स हैं लेकिन आपस में कोई मीनिंग नहीं निकलता। कहते रूफ ऑन, इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन ऑन द रूफ का मतलब है ना। तो ऑन द रूफ क्या है? तो मीनिंगफुल ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड phrases. That's simple. Any two words or three or four or more than one meaningful group, okay, is called a phrase. तो जैसे आप बोलते हैं a big window, एक फ्रेज है, इसका मतलब हुआ क्या? अब बोलो विंडो बिग, ये फ्रेज नहीं है, क्या क्या इसका कोई मतलब नहीं निकला। विंडो बिग इज नॉट अ फ्रेज। तो पहले क्लियर कर लीजिए फ्रेज। अब बात करते हैं वापस आते वहां पे।
डज टॉम हैव अ लॉट ऑफ मनी? अगर मैं बोलूं टॉम के पास बहुत पैसा है, कैसे बोलूंगा? अब मुझे लाठी उठाना पड़ेगा। लाठी, क्या उठाना पड़ेगा? लाठी। इतने दिन से आप यही हैं, आप सुन रहे हैं मेरी बात पे, कोई असर नहीं हो रहा आप पे? नहीं, नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने जो बात बोली, याद करो यूनिट 4 के शुरुआत में मैंने क्या पूछा था तुम लोगों से? देयर आर में कोई चीज रूल टूट रहा है, याद है? बात करी थी कि कोई रूल टूट रहा है, क्या कहा था तुम लोगों ने? नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा ही इज, ही आर बोल सकते हो? नहीं, नहीं हो सकते। तो क्या समझे थे कि वर्ब का जो फॉर्म होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? कभी भी राइट साइड वाले पे नहीं, इस केस में छोड़ करके, ये एक्सेप्शन केस है जहां सब्जेक्ट देयर ही है, लेकिन जो वर्ब है वो दाएं साइड वाले की वजह से हो रहा है। देयर इज ए कार, देयर आर टू कार। याद है ये सारी बातचीत? तो कहाँ है इसका असर तुम्हारे ऊपर? अब जो तुमने जवाब दिया कि ये प्लूरल है दाएं साइड में, उसकी वजह से वर्ब डिसाइड हो जाएगा। उस हिसाब से तो ही हैव टू सन्स होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि दो सन्स है, प्लूरल है, तो हैव होना चाहिए। Please be sincere. Agar, if you really hope that you want to make it to another level, fluency and knowledge, then you have to be sincere about your learning. You can't take anything for granted, my dear. Nobody can. If you, देखो, the worst mistake a person makes in a fight is underestimating the opponent. If you're getting into a fight, think, अरे उसका तो पटक देंगे उठा के, ये बड़ी खतरनाक हो सकती है चीज। All right. So similarly, when you have decided that you are going to learn English, you've come here, at least acknowledge that English is troubling you and you need to do something about it. If you are over chilled, over relaxed about it, complacency आ जाएगी तुम्हारे अंदर, फिर तुम नहीं improve करोगे वैसे जैसा तुम चाहते हो। फिर रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, रिग्रेट्स के अलावा कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। यू डोंट वांट दैट सिचुएशन। मैं सिर्फ इतना पूछूंगा, विकास तुम मेरे सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट में से हो यहाँ एक, ये बात कैसे तुम्हारे दिमाग से निकल गई? याद है ये बातचीत जो मैं अभी की? देर आर, इसका कोई रूल टूट रहा है, मैंने पूछा था फर्स्ट डे जब मैंने पढ़ाया था, तो तुम थे ना यहीं पे? याद नहीं आ रही बातचीत? आप में से किसी को ये बातचीत याद है कि देर इज ए समथिंग, देर आर समथिंग? मैंने कहा ये सेंटेंस बेसिक नियम को चैलेंज करती है, वायलेट करती है। तुम लोग कौन सा नियम, क्या हो रहा है? मैंने कहा तुमने कभी सोचा नहीं था ना, जब हम लोग कहते हैं ही हैज ए सन, लेकिन आई हैव अ सन, ही गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, तो वर्ब किसके हिसाब से है? सब्जेक्ट के। और यहाँ सब्जेक्ट क्या है? देयर इज ए कार, देयर। फिर अगले सेंटेंस में देयर आर टू कार्स, अभी भी सब्जेक्ट क्या है? देयर। लेकिन वर्ब बदल गया, किसके हिसाब से? राइट साइड वाले के हिसाब से, जो कि रेयर केस नहीं होता। इंग्लिश में वर्ब किसके हिसाब से होता है? ये सारी बातचीत, खाली आपको ये पता नहीं क्या आपको ये बातचीत याद है? मैंने आपसे ये बातचीत की थी, आपको याद है? अगर नहीं याद है तो बोल दीजिए सर याद नहीं है सर। इससे ये पता चलता है कि आप मेरी बात को कैरी नहीं कर पाते। किसी एक को याद है कि ये बातचीत हुई थी? याद है आपको ये बातचीत हुई थी? ये बातचीत हुई थी, इसका मतलब ये बात हुई। अगर आपके दिमाग में नहीं तो आप एक लेसन ले सकते हो। यार क्लास में क्या बोला जाता है हमको याद नहीं रहता, तो हम सीखेंगे कैसे? यानी कि हमको ध्यान देना होगा कि सर क्या बोलते हैं क्लास में, क्योंकि वही है सीखना। सीखने के लिए दीवारें थोड़ी सिखाने वाले। माई वर्ड्स विल टीच यू, राइट? एंड यू डोंट रिमेंबर व्हाट आई सेड क्लियरली, यू आर नॉट लर्निंग मच। So be sincere. Remember, realize it that I need to pay more attention in the class. I need to listen to him with more intensity, that I'm listening to him to learn from him. Don't listen to me for pleasure. Listen to me because you want to learn from me, from my words. Your intensity will increase when you have that attitude. भाई मुझे सुनना है सीखने के लिए। अच्छा ये बोले, इसका ये मतलब हाँ हो गया। इस एटीट्यूड से आप नहीं फायदा ले पाओगे मेरे बोलने का। अभी ये जो जवाब था ये सबसे खराब जवाब था। तुमने पूछा, मुझे बुरा नहीं लगा, बिकॉज यू हैव रिसेंटली ज्वाइन द क्लास, तो आई नो, बट इसलिए मैंने कहा यू गाइस कैन आंसर। गणपत तुम भी नहीं जवाब दे सकते? उसने कहा इस सेकंड बेटा, डज ही हैव अ लॉट ऑफ मनी, डज टॉम हैव अ लॉट ऑफ मनी? नहीं जवाब दे पाओगे? इतना सारा सुनने के बाद देख रहे हो ना,
How should I feel right now? Because what should be my feeling inside right now? तुम्हें याद है स्लाइड? तुम बता सकते हो कि ये does from have a lot of money क्यों है? थैंक गॉड तुमने बहुत परेशानी झेली थी, राइट? इसका a lot of money से कोई लेना देना है? कोई लेना देना है? किसी वर्ग का लेना देना किससे होता है बेटा? वर्ग के फॉर्म का लेना देना किससे होता है? सब्जेक्ट से होता है। आदित्य तुम्हें कुछ याद है? Does Tom have a lot of money now? Have क्यों बोला जा रहा है? चलो अब तुम्हें कहता हूँ कि तुम अपने अंदर झांक करके सीख सकते हो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग हड़बड़ में खाली दौड़ रहे हैं, पागल की तरह इधर उधर दौड़ रहे हो। प्लीज एक डायरेक्शन ढूंढो अपने लिए, ओके? अपनी हेल्प के लिए बताओ कौन सा सेंटेंस सही है। डज ही गो टू स्कूल, डज ही गोज टू स्कूल? तो ये जो हड़बड़ हड़बड़ में दौड़े हो तो इसके पीछे सोचो कि क्यों ये सही है और गोज क्यों सही नहीं है, ये भी सोचो अपने आप। तो गोज और गो में क्या फर्क फर्क है? गो और गोज में क्या फर्क है? नहीं सोचो ना, तुमने कहा कि डस लगा है तो गो लगेगा, तो गो और गोज में क्या फर्क हुआ, इसी से समझ जाओगे, कुछ नया नहीं बोलना होगा। समझ जाओ। अगर मैं कहूँ कि वो स्कूल जाता है तो क्या बोलूंगा? ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ठीक है। और जब मैं पूछता हूँ कि स्कूल जाता है तो मैं क्या बोलूंगा? डज ही गोज टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल? तो ये दोनों लाइन से हम आगे अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्या समझेंगे, गोज में से एस हटाना पड़ता है। तो वैसे ही हैज में से भी तो एस हटाएंगे ना जब सवाल पूछेंगे तो। जैसे वो उसके पास बहुत पैसा है, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, ओके। लेकिन क्या उसके पास बहुत पैसा है? तो डज आगे लाए, जैसे डज ही गो टू स्कूल में से गोज हटा, एस हटा दिए थे ना, तो वैसे डज ही हैज में से एस हटा देंगे तो बचेगा क्या? हैव बचेगा, क्योंकि हैव में एस जोड़ते हैं तो वो हैज बन जाता है। तो तुम नहीं थे यहाँ पे, ये सारी चीजें हो रही थी, तुम शुरू से हो इसको। मैं राइट? फिर ये क्या हो रहा है? ये मैं पढ़ा रहा था, अच्छा मुझे याद है कि मैं इंग्लिश बोल के पढ़ाता हूँ। तुम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब मैं इंग्लिश बोल के रूल्स पढ़ाता हूँ तो तुम लोग प्रिटेंड करते कि तुम समझ रहे हो। तुम्हारे अंदर ऑनेस्टी नहीं है, ब्रेवरी नहीं है बोलने की, सर एक्सप्लेन अगेन, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या बोल रहे हो आप? मेरे को पढ़ने नहीं पड़ा, एक्सप्लेन अगेन। When I'm explaining rules, when I'm talking about a topic, not grammar, okay? When I'm not talking about grammar, जो समझ में आया इतना काफी है। But when I'm describing a grammar rule, okay, be very honest with yourself. And if you don't understand the grammar rule I'm teaching, keep asking me, sir, explain again. Unless you inside start to feel confident, this is what my teacher is teaching, and I totally own it now. Okay? Unless you get that feeling, keep asking. Explain again. Explain again. I will understand that you're struggling. But if you pretend with your facial expression, I understand, he's going to harm you this way. We बताओ बेटा, कब डिस्कस किए, कह रहे हैं ये नहीं पता था। आपको पता था बेटा कि जैसे गोज होता है वैसे ही हैव से हैज होता है। जैसे ईट से ईट्स होता है, रन से रन होता है, वैसे ही हैव से। तो जैसे गो का V5 गोज है, ईट का V5 ईट्स है, हैव का V5 हैव है। मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही है। आप बताओ, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गो सब एक ही है ना, खाली अलग अलग फॉर्म से गो। वैसे ही हैव के ही सारे फॉर्म है, हैव, हैड, हैविंग, हैज, ये सब हैव ही। ओके, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, थैंक यू फॉर आस्किंग, क्योंकि तुम तो नहीं थी लेकिन तुम्हारी वजह से इनके दिमाग में भी चला गया जो मैंने पढ़ाया था, but they didn't remember one part. I'm going to be very, very annoyed, I'm telling you.
for the simple reason that you're not paying attention enough. Again, तुम कहोगे सर कर तो रहे, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हो आप, अच्छा करे, हाँ दोनों ही चीजें हैं। जब अच्छा करोगे तो अच्छा बोलेंगे, जब बुरा करोगे तो बुरा ही सुनोगे, हाँ कि ना? क्यों उसमें ना बोलूं तुम्हें? तो ये जवाब तुम सबको देना था। और विकास, तुमने रियलाइज किया कि तुम्हारी गलती को मैं एक्सप्लेन कर रहा इंग्लिश में और वही चीज बोला, इसका मतलब आज फिर वो नहीं समझा मैं क्या बोल रहा था। तो तुम्हारी बात क्यों होता वो? तुम्हारी बात बोलने पर मैंने तुम्हें इतना दोष दिया कि तुम नहीं ध्यान दे रहे थे, और वही बात वो रिपीट कर दिया। इसका मतलब वो बातचीत वो फॉलो नहीं कर रहा था। हाँ, नॉट एट ऑल, इवन टुडे, आज भी नहीं पे कर रहा था टेंस। इससे यही पता चला ना, ये गलत जवाब दिया। मैं इसको समझा रहा हूँ कि गलत है, और उससे पूछता हूँ वही बात बोलता वो जो इसने बोला, बताओ। तो दे नीड टू लेट मी नो ना दैट सर आप जो बोल रहे मुझे समझ नहीं आ रहा, राइट? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बेटा ये नहीं चलेगा, आप लोगों को हर हाल में ये बोलना होगा कि सर आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि जब तुम नहीं बोलोगे मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड, देन आई विल नॉट नो। खास करके जब तुम ऐसे जो ये ब्लैंक एक्सप्रेशन रखोगे जो भी है, तो कुछ नहीं पता मुझे, दिस एक्सप्रेशन गिव्स मी नथिंग। A good student communicates with the teacher through their face, through his or her face. They, you know, they have a good expression when they understand. When they don't understand, they should have these eyebrows coming together. This shows if there is a confusion in the person's mind. Communicate. Don't have the blank expression blank. बाकी तू गेस कर ले मेरा अंदर क्या कर, ये नहीं करेगा, okay? अरे यार, people, what will you get to see? Only my midway, mid body. वो तुमने गलत सुना बेटा, डज था, ओके? अच्छा बेटा, दिस टॉम हैव अ लॉट ऑफ मनी, ये पूछने का टोन था, ये जो सवाल आया ना तुम्हारे मन में, इसलिए लिखना, ऑडियो स्क्रिप्ट लिखना जरूरी है। ठीक है, तुम लिखी तो तुमसे गलती हुई, तुमने उसमें सोचा कुछ, अब मैं तुम्हें करेक्ट करूंगा तो तुम एक कदम और बढ़ोगे, ये दोनों नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं लिखे? असीम नहीं लिखा, आगे नहीं पढ़ेगा वो, क्योंकि तुम घर पे वो सोची थी ना, ये लोग थोड़ी सोचे थे ये। तो मेरा जो जवाब आएगा वो तुम पे ज्यादा असर करेगा, क्योंकि तुम घर पे कुछ सोची थी उस बारे में। देखो बताता हूँ। They're really expensive. Is it fast? Very fast. 2. Does Tom have a lot of money? क्वेश्चन जैसा टोन लगा कि नहीं, जो कुछ पूछ रही है, खाली ये बताओ, टोन से लगा कुछ पूछ रही है। तो अगर बोलेंगे दिस टॉम हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो फिर क्वेश्चन तो ये नहीं बना। क्वेश्चन बनने के लिए दिस जो तुम्हें लगा, तुम ऐसे ही सुनी थी ईयरफोन्स लगा के। अभी सुनो, प्ले दैट पार्ट, एवरीबॉडी लिसन, टेल मी व्हाट डू यू हियर, क्या सुनाई पड़ा? दिस सुनाई पड़ा? मुझे लगता है डज सुनाई पड़ेगा, अगर हो सकता बेटा छोड़ देते थोड़ा, क्योंकि दिस और डज का आवाज एक ही है, द बेटा वो है, डज टॉम हैव अ लॉट ऑफ मनी। लुक एट एंजेला का, ओके नो इश्यूज, सुनने का ही फायदा है, धीरे धीरे इंप्रूव करना, ठीक है? इस, इस बात को एक्नॉलेज करो सबसे पहले। जैसे हम लोग एबीसीडी भी लिखना नहीं जानते थे, आज फटाटेदार पूरा पन्ना लिख देते हैं, तो ये एक दिन में नहीं हुआ है। वैसे ही from not speaking any English, we can go to fluent English, but it takes a little bit time and effort, right? Those people who are not practicing ABCD today, they are not going to be able to write full page of English tomorrow. But those who are writing ABCD today, practicing ABCD, one day they will write full page in English. Am I right? So just believe in the process. Trust in the process. Sometimes we are so stupid that we question the process. The same process that has worked for us and so far, we question that process. I want to ask you, when you were 5 years old, if somebody had asked you कि बताओ 50,000 रुपए का 3% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 3 साल में, तो what? यही आता ना रिएक्शन तुम्हारा, 5 साल में 10 साल की उम्र में यही होता ना रिएक्शन। लेकिन आज तुम कर सकते हो, कुछ तुम में से, सब नहीं, क्योंकि जो अपना मैथ की प्रैक्टिस रेगुलरली किए वो यहाँ पहुंच गए ना। जो छोड़ दिए प्रैक्टिस मैथ के, वो अभी भी नहीं कर सकते ये चीज। दैट्स द प्रोसेस। इफ यू वांट टू बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश, आई विल नॉट टीच यू गुड इंग्लिश स्ट्रेट अवे, आई विल टीच यू दोज थिंग्स व्हिच विल इनेबल यू टू स्पीक गुड इंग्लिश। प्लीज अंडरस्टैंड दिस।
कुछ लोग बड़े बेवकूफ होते हैं, स्टूपिड होते हैं, वो कहते हैं मैट्रिक का एग्जाम देना, मैट्रिक का पढ़ाओ। तो मैट्रिक एग्जाम देना है तो वहां लेके जाना है जहां से आप मैट्रिक एग्जाम दे सकते, ये नहीं कि मैट्रिक का तो तुम 10वीं क्लास में एडमिशन ले लेते पहली बार में कि हमको तो मैट्रिक पास करना है। तो प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। तो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कुछ लोगों को लगता है ये छोटी छोटी बातें क्यों करते हैं हम लोग, बिकॉज दीज थिंग्स कम टुगेदर एंड इनेबल यू टू स्पीक गुड इंग्लिश। People don't understand this process, how it works. I cannot teach you fluent English. I can teach you things which will enable you. Enable you मतलब आपको उस लायक बना देगा that you will start to speak good English. That's my job as a teacher. I will not teach you fluent English. वो नहीं होता, ठीक है कि चलो ये है fluent English सीख लो जाओ. It's not like that. I have to help you with this, all those things which will come together and help you speak good English. One of those things was this lesson that you questioned, why have it there? Okay. So it should be, does Tom have a lot of money? The question should be, does Tom have a lot of money? आज के बाद किसी ने ऑडियो स्क्रिप्ट नहीं लिखा तो पैसा फाइन नहीं करूंगा, निकाल दूंगा क्लास से, क्योंकि अब तो एहसास हो रहा है ना कि गलतियां होती हैं लिखने में और वहां सीखने का मौका मिलता है। लिखने के बाद यहाँ आएंगे तो ओ ये दिस टॉम हैव अ लॉट ऑफ मनी से क्वेश्चन ही बनाओ, तो क्वेश्चन के सब कुछ बोल रही थी। डस टॉम हैव अ लॉट ऑफ मनी, पूछ रही है टॉमा के पास बहुत पैसा है ना, यही उसने पूछा। कैसे पूछा? डस टॉम हैव अ लॉट ऑफ मनी, और ये हैव इसलिए है क्योंकि डज है, क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो क्या होता? टॉम हैज अ लॉट ऑफ मनी। और लल्लू लाल, कुछ मैंने फिर से जो बोलना है सुनो, ए लॉट ऑफ मनी का हैव से कोई कनेक्शन नहीं है, वो एनी मनी हो नो मनी हो, वहां नो मनी भी होगा तो भी हैव होगा। फिर से सुन लो, जो जवाब दे रहे हो फिर से स्टूपिड साबित कर रहा है तुम्हें गन पर। तो वो जो जवाब है तुम्हारा कि वहां डज नहीं लिखा है इसलिए हम हैव, हमको लग रहा है कि उसका ये कंफ्यूजन हो गया। हैव का ए लॉट से कोई लेना देना नहीं। अगर मैं कहूंगा कि सीता के बहुत सारे बच्चे हैं तो सीता हैव अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन बोलूं, क्यों ए लॉट ऑफ है? नहीं समझा, फिर से बोलना। क्यों? उससे क्या मतलब है? अगर मैं बोलूं दिस गर्ल हैज अ लॉट ऑफ मनी तो क्या प्रॉब्लम है? दिस सुहानी इज अ ब्रिलियंट गर्ल बट शी डजंट रियली वर्क हार्ड, शी इज अ वेरी क्लेवर माइंड। दिस सुहानी, तो इसमें क्या परेशानी, तुम्हें क्या समस्या लग रही है? देखो, तुम जहां पर पॉइंट रखना चाहिए नहीं रख पा रहे हो, तुम इधर उधर जा रहे हो। प्लीज फोकस ऑन द मेन पॉइंट। तो दिस तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर सकता अगर तुम्हारे दिमाग में जो चीज है वो है। मैंने पूछा हैव क्यों होगा, वहां यही पूछा था ना मैंने तुमसे, तुमने क्या जवाब दिया कि ए लॉट लिखा है इसलिए, हाँ या ना? क्या इसका कोई कनेक्शन है इस बात से, हैव का ए लॉट से? क्यों जवाब दिया सवाल क्या जवाब? दिस से कोई कनेक्शन नहीं बनता। दिस है चाहे नहीं है इररिलेवेंट है, फिर से बोल रहा हूं। वहां हैव क्यों है, और हैव अगर है तो सही क्यों है, इसका जवाब का ना दिस से कोई लेना देना हो सकता है ना ए लॉट से लेना देना हो सकता है, क्योंकि हैव वर्ब है, वर्ब का लेना देना सब्जेक्ट से होता है। तो अगर मैं हैव बोलता हूँ टॉम के पास तो तभी बोल सकता हूँ जब वो क्वेश्चन हो उसके पहले क्या है, दैट डज टॉम हैव अ लॉट, ओनली देन इट इज करेक्ट। अदरवाइज आई कैन नॉट से टॉम हैव, इम्पॉसिबल। आई विल ऑलवेज हैव टू से टॉम हैज। मैं कभी नहीं बोल सकता टॉम गो, मुझे बोलना पड़ेगा टॉम गोज। हाँ, क्वेश्चन में मैं बोल सकता हूँ जस्ट टॉम गो टू स्कूल, राइट? ये बहुत बेसिक लेसन है मेरे पहले महीने की पढ़ाई, इसमें इतनी सा कंफ्यूजन मुझे नहीं चाहिए। क्यों? इसी को मैं यूज करूंगा यूनिट 5 और 6 में।
और जो इसको क्लियर रखे हुए, जैसे तुम रखे हुए क्लियरली दिमाग में ना, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टेक्निकली, theoretically in Unix, it's going to be very। और बाकी जो लोग भूल चुके हैं इस चीज को, बाय द वे, जैसे आप भूल गए, आप भूल गए और आपने से कोई जवाब नहीं दे रहा, यू गाइस आर गोइंग टू हैव बिग बिग कंफ्यूजन इन यूनिट 6। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, फिर से बता रहा हूँ। तुमने एक दो नीचे किताब लगाई, नीचे में गलत कर्व लगाई, ठीक है, थोड़ा एकदम से बेटा उनका दिमाग जाएगा, वो गिरा देगा। तो तुम्हारा फाउंडेशन नीड्स टू बी रियली गुड। और मैंने यूनिट 1 और 2 में वो चीजें पढ़ाई जो आगे तुम्हें गाइड करें, नहीं तो उसको मैं बाद में रखता। तुमने कभी गुना पहले क्यों नहीं सीखा? इस जोड़ का यूज होता है गुना में, तो पहले गुना कहीं से कैसे सिखा सकते हैं? वैसे इंग्लिश में कुछ ऐसी चीजें जो पहले इसलिए बताई जानी चाहिए ताकि उनका यूज हो पाए बाद में दोबारा दूसरी चीजों को सीखने में। तो कुछ भी जो आप दे रहे हो ना गणपत, उसको डिफेंड करने के लिए कि हम इसलिए कंफ्यूज हुए, हम उसलिए कंफ्यूज हुए, नथिंग इज हेल्पिंग यू माय डियर, यू अंडरस्टैंड? तुम्हारा जवाब इसलिए गलत है क्योंकि तुम खुद कंफ्यूज, ए दैट्स ऑल। वहां दिस है तो पर भी वहां हैव होना चाहिए, ठीक है? और वहां अगर डज है तो वहां हैव होना चाहिए। तुम्हारा डिसीजन है, मैं नहीं कह रहा। सब लोग ऐसे ही सोच रहे हैं। अगर वहां दिस लिखा है, दिस टॉम, तो आगे क्या होना चाहिए बेटा? हैव होना चाहिए। लेकिन अगर वहां डज लिखा है तो वहां क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। तो जिन लोगों ने दिस टॉम हैव सुना, उनको इससे पूछना चाहिए कि पॉसिबल ही नहीं है ये मैं क्या सुन रहा हूँ या क्या सुन रही हूँ। हाँ ठीक है, पूछ, ठीक है। यही सवाल मन में चलना चाहिए कि दिस टर्म हैव हो कैसे सकता है? ये तो इंग्लिश के रूल के खिलाफ है जो मैंने सर से पढ़ा है। इट्स नॉट पॉसिबल। और अदरवाइज आज कुछ सर नया बताएंगे तो ये हो सकता है। जो अब तक जाना उस हिसाब से ये क्या है? गलत है। ये डिसीजन होना चाहिए था तुम्हारा। और ऐसे लॉजिकली सोचोगे ना, यू विल गो फार। कि अब तक जो पढ़ा है उस हिसाब से तो ये गलत लग रहा है। दिस टर्म हैव, हाउ? टर्म हैव, दिस टर्म मतलब ये टर्म, ठीक है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, दिस गर्ल, दिस सुहानी, इज वेरी नॉट, तो ऐसा बोल सकते हैं ना, अरे ये सुहानिया जो है ना बहुत बदमाश है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना बिहारी में। इंग्लिश में भी तो ऐसे बोलेंगे, दिस सुहानी इज वेरी नॉटी, वेरी मिस्टीफियस। ओके, तो दिस सुहानी मैंने बोल दिया तो क्या डील हो गया? व्हाट्स बिग डील? तो तुम बताओ ना कि तुम तो उसको डिफेंड कर रहे हो। अगर दिस सुहानी होगा तो वहां हैव होगा नहीं, ये तुम्हें बोलना चाहिए। तो तुम उसको डिफेंड कर रहे थे कि अलॉट लिखा इसलिए सही हो गया। अब समझ में आई तुम्हारी गलती? वहां दिस लिखा है, दिस टर्म, और तुम हैव को एक्सप्लेन करो कि इस वजह से सही है। अगर दिस टर्म होगा तो क्या होगा बेटा? वो हैव हो ही नहीं सकता। हाँ, वहां एरर होगा, राइट? और वो उसको डिफेंड कर रहा है कि लॉट ऑफ मनी है ना, इसीलिए हैव सही है। फिर वो नहीं मान रहा है, एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। गणपत, तू एक्नॉलेज अभी भी नहीं कर अपनी गलती को। हो गया? पक्का समझ में आ गया? ठीक है फिर। वंस यू रियलाइज कि क्यों तुम गलत हो, तो अगली बार वो गलती शायद चांसेस कर जाए। Sometimes what happens out of pressure or whatever, students without realizing say, okay sir, नहीं करना चाहिए। अरे एक पैशनेट क्लास है यहाँ पर, जहाँ पे एक पैशनेट टीचर इज टीचिंग यू। तुम जितनी बातें करोगे उतना एनकरेज करूंगा मैं तुम्हें कि हाँ ठीक है, पूछो ना, कंफ्यूजन है, बोलते रहो, अनलेस यू फील यस आई अंडरस्टैंड, बिकॉज दैट्स माई earning, that's my achievement. I explained it to you. It took 20 minutes, but you eventually understood. Okay. I'm not somebody who will run out of patience and say, nahi samajh mein aa raha, chodo, tumko nahi samjhayenge. I won't do that. Okay. So this Tom have a lot of money is wrong English because Tom is the subject. It should be this Tom has. However, in this audio file, we did not hear this Tom. We heard, does Tom have a lot of money? She's actually asking her friend, does Tom have a lot of money? Then her friend replies, Well, really expensive. Is it fast? Very fast. 2. Does Tom have a lot of money? Well, he has a really beautiful house. that's why she's replying, well, he has a really beautiful house. अब कनेक्शन बन रहा है ना, जब वो डज बनता है तो दिस बनता है, तो कनेक्शन नहीं बनता अगली बात का उससे, कि वो बोल रही है दिस टॉम हैव अ लॉट ऑफ मनी। पहले तो गलत सेंटेंस है। और अगर मान लो दिस सेंटेंस तुमने हैज सुन भी लिया होता, हैज लिख भी लिया होता, तो फिर इसका कनेक्शन इससे नहीं बन पाता कि ये क्यों बोलेगी वेल ही हैज। पूछ रही है उससे
Does Tom have a lot of money? Well, he has a really beautiful House with a very big garden and a very big garden. Question mark. क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है. Does Tom? और ये सब चीजों पे तुम्हें बहुत ध्यान देना है लिखते समय. Question mark, full stop, comma, dashes. These things you will only learn when you're writing or you're speaking. ये देखो कैसे एक बात का connection. Does Tom have a lot of money? Full stop or question mark? Because she's asking, right? Oh yeah, well he has a really beautiful house and a very big garden and a swimming pool. with a swimming pool. He's very rich, isn't he? He's very rich, comma, he's very rich, comma, isn't he? He's very rich, isn't he? Don't become. He's very rich, isn't he? बहुत अमीर है ना, बहुत पैसा वाला है ना. इसके बाद क्वेश्चन मार्क बेटा. Very good. But beta, he is very rich, comma, isn't he? Isn't कहाँ है? He के पहले. तो जब verb subject के पहले है तो वो question mark होगा. Okay? और ये opinion दे रही है, you're right. Okay? But वहाँ question mark होगा सिर्फ इस वजह से कि isn't he लिखी. ठीक है? कई बार क्या होता है बेटा? Purpose जो sentence का होता है उससे ये नहीं डिसाइड करते, स्ट्रक्चर से डिसाइड करते हैं. जो क्वेश्चन मार्क होगा फुल स्टॉप होगा, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर. मैंने डज आगे लगाया, क्वेश्चन मार्क मुझे देना चाहिए, राइट? तो इजंट ही, नॉर्मली ही इजंट होता है या इजंट ही स्टेटमेंट में क्या, लेकिन जब फुल स्टॉप होता, लेकिन ये तो इजंट ही है तो इट शुड बी अ क्वेश्चन मार्क. ओके फाइन. तो अभी वी आर आउट ऑफ टाइम और आप में से कई लोगों ने ऑडियो स्क्रिप्ट नहीं लिखे हैं. प्लीज, आपके दोस्तों ने लिखा हुआ है, आप बेईमानी करना चाहोगे मैं पूरा का पूरा तिजोरी खोल दूंगा आपके सामने. ठीक है, ले लो जितना चोरी करना है, क्योंकि इससे आपका फायदा नहीं है. यू आर गोइंग टू राइट योर ओन ऑडियो स्क्रिप्ट, खुद से सुन के लिखना. उस पर जो लर्निंग होगी ना सीख सुनते समय, वो तुम्हारी रियल अर्निंग है. तुम किसी का देख के उतार दोगे, कॉपी कर दोगे, जैसे एक बार रवि ने किया था ना रवि. तो बेटा बच्चा मत बन, वो 5 साल 8 साल वाला जो टीचर के डर से पढ़ रहा है. ये तो स्कूल है क्या जहां तुम्हारा आना मजबूरी था? तुम 5,000 रुपए दे के आए हो बेवकूफ. ठीक है, क्यों करोगे ऐसा तुम अपने 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 पैसे के साथ, अपने आप के साथ? यू वांट टू डू योर बेस्ट हियर so that you can earn what you have come here for. All right? With these motivating words, I would like to conclude, and we will meet on Monday, hopefully, 7 o'clock. And most probably, 99% chances are, we'll conduct our class downstairs. Okay? Fine, I'll see you.